Welcome, dear students. So, today our topic is access specifiers in C++ or object oriented programming. So, actually, what are these access specifiers? They are used to set boundaries. They are used to set boundaries for data members and member functions of a class. So we may say that this is an important security feature. तो इससे हम क्या करते हैं, हम अपनी क्लास में जो भी हम डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस यूज़ करेंगे उनकी बाउंड्री को हम सेट करेंगे कि ये क्लास के अंदर ही खाली जाने जाएंगे, क्या इनको इनहेरिट किया जा सकता है, क्या ये क्लास के बाहर भी इनको एक्सेस किया जा सकता है. सो डिपेंडिंग अपॉन द data, what type of data we are using, we will provide the special access or we will use this access specifiers in our program. So we have three types of access specifiers. First one is private, second one is public, and third one is protected. So what happens in first case? In private visibility, it is accessible only by member functions of class and friend functions. Friend function is a separate topic. Second, public. It can be accessed outside the class besides member functions. यानी member functions के बगैर भी इसको हम directly access इसी प्रोग्राम में कर सकते हैं, outside प्रोग्राम नहीं. Then third one is protected. This visibility mode, this is used in inheritance. मतलब अगर हम protected रखेंगे, ये protected हम क्यों रखेंगे? अगर हम प्राइवेट विजिबिलिटी मोड यहाँ पे रखेंगे और फिर ये चाहेंगे कि ये दूसरे जो इसके ड्राइव्ड क्लासेस होंगे, अगर मैं इनहेरिटेंस की बात करता हूँ और इनहेरिटेंस के प्रोग्राम में मैंने कुछ डेटा मेंबर्स को या मेंबर फंक्शंस को प्राइवेट सेक्शन में रखा है. तो प्राइवेट का मतलब क्या है कि ये ओनली एंड ओनली एक्सेसिबल है थ्रू मेंबर फंक्शंस ऑफ द क्लास और फ्रेंड फंक्शंस. तो इसमें सवाल ही पैदा नहीं होते कि ये जो प्राइवेट मेंबर जो हमने प्राइवेट सेक्शन में रखे हैं या मेंबर फंक्शंस रखी हैं वो कभी भी इनहेरिट नहीं होती. फर्स्ट पॉइंट, नेवर इनहेरिटेड. सो प्राइवेट मेंबर्स और नेवर इनहेरिटेड. अब पब्लिक पे आते हैं. तो पब्लिक है, ये एक्सेसिबल है आउटसाइड क्लास और क्लास की जो मेंबर फंक्शन वो भी एक्सेस करते हैं और आउटसाइड. तो इसमें थोड़ा सिक्योरिटी का मसला रहता है कि आगे जाके जब हम डिराइव क्लास में इसको यूज़ करेंगे वहाँ पे कौन सी लिमिटेशंस रहेंगी इस डेटा पे
उसके लिए हमारे पास एक और मोड है, डैट इज़ प्रोटेक्ट। ये इन बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक है, तो ये हमें एक्सेस देता है। इस डेटा मेंबर को हम प्रोटेक्टेड सेक्शन में रखेंगे ताकि वो आगे वाले जो उसके डिराइव्ड क्लास हैं वहाँ पे यूज़ हो सके। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट सिक्योरिटी फीचर। इस फीचर को हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, एक छोटी सी एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। C++ एग्जाम्पल हम लिखेंगे यहाँ पे, तो एक क्लास लिखेंगे, मैं फिर से लिखूंगा सारा, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्लास मैंने बनाया है स्टूडेंट, और इसमें क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्राइवेट। ये लिखना इसका मतलब है कि जो मैं इसके नीचे जो लिखूंगा वो क्या है, वो प्राइवेट मेंबर बनेगा। अगर मैं नहीं भी लिखूंगा, कोई भी विजिबिलिटी मोड नहीं रखूंगा, तब भी ये क्या है, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इंट रोल नंबर, ठीक है। खाली एक डेटा मेंबर है इसमें जिसका नाम है रोल नंबर, और इस क्लास में कुछ भी नहीं। इसको मैं यहाँ पे क्लोज करूँगा, क्लास को बंद करूँगा। यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं मेन प्रोग्राम में यहाँ पे स्टार्ट करूँगा लिखना मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन में सबसे पहले इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। क्लास का ऑब्जेक्ट बनने के लिए क्लास का नाम और ऑब्जेक्ट, एस एक ऑब्जेक्ट इसका बन गया। फिर मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा एस डॉट रोल नंबर। एस के पास जो रोल नंबर है, क्या मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है स्टूडेंट क्लास का, और उस स्टूडेंट क्लास में एक डेटा मेंबर है डेट इज रोल नंबर, बट वो प्राइवेट है। एस के पास ये है, क्या ये एक्स इसको आउटसाइड क्लास एक्सेस कर सकता है, डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, वो हमें देखना है। एस डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू 101। उसके बाद मैं क्या करूँगा, सी आउट एस डॉट रोल नंबर। क्या ये रोल नंबर जो मैंने यहाँ पे ऊपर वाले इस स्टेटमेंट में मैंने असाइनमेंट स्टेटमेंट की यहाँ पे 101 किसको दिया, ऑब्जेक्ट एस के रोल नंबर वाले डेटा मेंबर को दिया। ये वैलिड स्टेटमेंट है, बट एक्सेस मिलेगी इसको या नहीं मिलेगी ये हम रन करके ही पता चलेगा। उसके बाद गेट ch टू होल्ड द स्क्रीन। इसके बाद ये यहाँ पे मेन प्रोग्राम खत्म। इसके बाद क्या करेंगे, हम इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे कंट्रोल F9 करके। तो यहाँ पे बोलता है कि मेक फेल्ड, यानी कि प्रोग्राम बनाने। हम एंटर करेंगे, देखेंगे क्या एरर है। बोलता है यहाँ पे स्टूडेंट का जो रोल नंबर है, स्टूडेंट क्लास का जो रोल नंबर डेटा मेंबर है, इज़ नॉट एक्सेसिबल। ये एक्सेसिबल नहीं है, मतलब हम इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। वापस प्रोग्राम पे जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पे प्राइवेट को हटा के पहले देखेंगे। यहाँ पे अगर प्राइवेट नहीं लिखेंगे तब क्या होता है, तब भी यही एरर आएगा सेम। इसका मतलब है वी कैन राइट प्राइवेट और we cannot write private. If we do not write any specifier, that it is by default it is private. You have to remember this. But if I specify that this roll number is public, see the difference. And access specifier is followed by a colon. Rest of the things are followed by semicolon. Now I will run the program, control F9. The program successfully run and it produces the output 101 on the screen here. So it is obvious that while using a public data member, we can access it without using a member function, that too outside class. But if we want to use this roll number and it is access is as private, then what we need a member function. That member function is, the access of that member function is private. We will write void get data, and we will write void display. Here we don't have defined these functions, but we have only declared them. Here this is function declaration, and here
this too is a declaration. In previous class I have used two functions with the same name, but in that program what we have done, we have defined the functions inside the class. At that time I have told you that there are two ways to define a function when using a class. First one is we can define them inside the class. Definition means what the function will do, and other method is to define them outside the class. But when we use outside class definition, we have to use a special operator that is known as scope resolution operator. And the scope resolution operator is nothing but two colons put together. So what is the syntax of defining a class member function outside class? We will write return type. Here return type is void. Then we have to write class name, that is student. Then we have to write scope resolution operator, that is two colons. Then we have to write function name, get data, then parenthesis. Then what we want to do in the function, here we want to do this thing: cout enter roll number. We will give message to the user to input the roll number, and the roll number will be stored in the variable roll number because here it is accessible. This is the member function. This thing will be done by this function get data. Same is the case with another function, that is void, then class name, then scope resolution operator, then function name, parenthesis. And in this function we only need to do to print the value which we have entered through the keyboard in function get data. So we have to here only display roll number, cout roll number, semicolon, brace close. So now we will use object S, and through object S we would like to call function get data first, because we have to get the data. This function call, what is this step called? This is called call to function. And when we call a function, it jumps to the function definition. Then we don't need any cout here. For that we have a function that is display s dot display. Then we will call display, and whatever is the value in s dot roll number, object S has a data member roll number, and we have inputted the value when the call to this function gets executed. Then another call to function, this time to function display. So we will run this program. For run we have to press Ctrl F9 together. There is no error, and the message on the screen flashes enter roll number. I will write 146. Then the display on the screen is 146. That means whatever I have entered, that has been stored in roll number variable, and when display is called, the value of roll number gets printed on the screen. So this way we can use the access specifiers private and public. For protected, when we will start inheritance program, at that time we will use the protected access specifier. So access specifier is a full-fledged question in C++, wherein the main points are: in private we have to remember that private members, the members declared as private, can be used only by member functions.
and friends of the class. Protected are class members declared as protected can be used by member functions and friends of the class. Additionally, they can be used by classes derived from the class. यानी कि जो इस क्लास में जिसमें हमने प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स रखे हैं या मेंबर फंक्शंस रखी है, उस क्लास के जो डिराइव्ड क्लास होंगे वो भी उन मेंबर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं. प्राइवेट मेंबर कभी ये इनहेरिट नहीं होते हैं, प्रोटेक्टेड मेंबर इनहेरिट होते हैं. पब्लिक मेंबर इनहेरिट होते हैं, बट वी डू नॉट यूज पब्लिक मेंबर्स इन इनहेरिटेंस बिकॉज ऑफ डेटा सिक्योरिटी. So sometimes the data will be very secure and we do not want the data to move freely. If we keep the data as public, that can move freely. That has no limit of accession. कोई भी एक्सेस की लिमिट नहीं है, कोई भी एक्सेस कर सकता है outside this class, outside कोई member function भी. So we need be very careful while accessing these access controls, while giving the access to different types of data members as well as member functions. Hope this chapter may have cleared your confusion about access specifier. For any further queries, you can text me, you can call me, you can write in the comment box. The video will be uploaded shortly on my YouTube channel. Thanks, have a nice day, stay safe, stay home.